Hi, a very good afternoon to all of you. Okay. So now in today's session, we'll just talk about IIT Kanpur, right? And how the students or who are the students eligible for IIT Kanpur Round 2. Okay. So unlike any other IIT, in terms of IIT Kanpur, they conduct their own entrance, but after shortlisting students. Okay. That is one thing. So unlike IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT Madras, जो IIT JAM लेते हैं, GATE लेते हैं, और in case of additional 15 seats, IIT Delhi conduct its own examination. ठीक है? In case of IIT Kanpur, they shortlist students based on the JAM and the GATE score, the best of the two, right? So any student who has given IIT JAM or GATE, they are kind of eligible to fill the form for IIT JAM. Okay, that is for IIT Kanpur. That is one thing. Let's just begin from scratch ki how you can start your registration and everything. And meanwhile, in between, we'll discuss the process, who all can and what will be the process once you register for IIT Kanpur. Okay, simply just Google IIT Kanpur admissions and then you reach PG admission ka page. ठीक है. So this is the home page जहाँ पे सारी information, everything will be updated during the entire process of admission, right? अगर आप यहाँ पे notice करोगे, they clearly mention for different courses, including MSc Economics, a 2-year course, the admission has started now. ठीक है. Same time, looking at the announcement section, यहाँ पे अगर आप notice करोगे, they have also mentioned up the timeline of the registration process. ठीक है. अब timeline क्या है, मैं कब से लेके कब तक IIT कानपुर के लिए register कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, right? So in terms of date, it is 28 March, which was last Friday, and it is open till 16th of April 2025. So you easily have more than 15 days, ठीक है, टू रजिस्टर फॉर आईआईटी कानपुर. तो ये बात हुई आपकी टाइमलाइन की टू रजिस्टर फॉर आईआईटी कानपुर. ठीक है. नाउ let's come to the fact कि who all can register that we started initially. ठीक है. So not everyone can register. That is one thing. मतलब अगर मैंने जैम या गेट का एग्जाम नहीं दिया है, then I am not eligible to fill up the form for IIT कानपुर. ठीक है. Are all the students who appeared in an IIT JAM can register for IIT Kanpur? Yes, in terms of registration, of course you can register. All the students who appeared in GATE, they can register, right? But you also need to understand the fact that there is a criteria called shortlisting. ठीक है. तो यहाँ पे shortlisting involved होगी. Meaning, for example, I gave IIT JAM, मेरा rank आया, let's say 10 11 कुछ, ठीक है. And similarly for my gate also I had, let's say, 12 15 rank, just a random number, ठीक है. Then of course you know that you will be shortlisted for IIT Kanpur, right, based on either of the school, right? So you need to understand one thing. If for example, if I am getting a rank of, let's say, 1000, ठीक है, so in that case, the chances of getting shortlisted is very minute, right? That is very important. I can't have a random number and go and apply, thinking कि मेरा shortlist हो जाएगा ना for the round 2. No, that won't be the criteria. ठीक है. Of course, the number of students being shortlisted, जो उसका number है, that is huge. Around 300 400 students get shortlisted. रफली, ठीक है, इसके आसपास रहेगा. अब इस साल कितने होंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन, राइट? सो ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टिल अ गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्ट लिस्टेड. ठीक है. दैट इज द रीजन ऑल द स्टूडेंट्स टेंड टू अप्लाई. ठीक है, जिसमें कोई हार्म नहीं है. इट्स एप्लीकेशन फॉर्म, जस्ट सिंपली गो एंड अप्लाई एंड विश की दैट वी गेट शॉर्ट लिस्टेड based on our ranking or marks either in IIT JAM या गेट. ठीक है. सो ऑफ कोर्स आई वोंट से कि अगर आपका 800,000 का स्कोर है दैट यू डोंट अप्लाई, रैंक है दैट यू डोंट अप्लाई. आई विल स्टिल से देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग इट, बट the chances are pretty bleak that you will be shortlisted for the round 2. ठीक है. But considering it is open for all the students,
ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स जिसने आईआईटी जैम दिया है, गेट दिया है, आई कैन ओनली से दैट यू गो एंड रजिस्टर फॉर आईआईटी कानपुर, देयर इज नो हार्म। ठीक है, क्या पता शॉर्ट लिस्टिंग नंबर्स इस बार बढ़ जाए, मे बी दे गो फॉर 500 रैंक, 600 रैंक और एनी नंबर फॉर दैट मैटर। ठीक है, इट कैन बी 1000 एज वेल, मतलब इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बोला है कि हम सिर्फ अभी यहाँ तक बुलाएंगे इस रैंक तक। तो व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, then you can take your shot as long as you have appeared for IIT JAM and GATE. हाँ, but the other important part is that at least you should have crossed the cutoff वाला mark. ठीक है, it's not that आपने cutoff भी cross नहीं किया है, then you're still applying it, because in that case, of course, you won't be shortlisted. ठीक है, so to bring a borderline for you, so all the students who have cleared the cutoff, ठीक है, all the students who have cleared the cutoff either of JAM or GATE, all of you please go and apply for IIT Kanpur. ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग बाद की बात है, लेट्स लीव इट टू देम। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रखते हैं, क्या बेसिस रखते हैं, कितने रैंक तक रखते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू देम। बट एज लॉन्ग एज यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ in either of the exam, please go and apply for IIT Kanpur. Is pure suggestion that you give it a shot. ठीक है, now dates हमें पता है, who all can apply, that is also something we know, right? Now look at the, हाँ, तो इस सेशन में I'll just complete all the details for you। और एक जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, जो आईटी कानपुर का जो पोर्टल है शायद बीच बीच में लैग कर रहा है या उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो जस्ट बियर विद इट, राइट? दैट इज वन थिंग, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज इट वर्किंग दैट वेल, और हो जाता है थोड़ा बहुत ग्लिच, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर देयर एंड कीप ऑन अप्लाइंग इट, हाँ, और सेव करते रहना फॉर श्योर। ठीक है, okay, so this is your home page and let's just quickly go through the information पहले। ठीक है, हाँ, okay, so this is basic information that all the final year students can apply with all Indian candidates, how can you apply, date हमें पता है, important link is this which is here। हाँ, एप्लीकेशन फी, बिकॉज काफी बच्चे पूछते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या है, या अक्षत, आई जस्ट टेक योर क्वेश्चन, just let me just wrap up this point. So application fee for IIT Kanpur is rupees 500, and I hope all of you can register for IIT Kanpur, especially when the registration fee is very minimal, but of course if you have cleared the cutoff. Okay, that's the bare minimum mark for all of you. Okay, sir, I have made certificate for previous year valid for IIT. Yeah, Akshat, when it comes to certifications, ठीक है, चाहे वो EWS हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, हमेशा जो प्रेफरेंस रहती है दैट इज फॉर द लेटेस्ट ईयर, मतलब काइंड ऑफ लेटेस्ट ईयर, जो मैं आपको एक यहाँ पे भी वो पॉइंट दिखाऊंगा इफ इट कम्स अप। So in your case, if you have at least 2024 1st April onwards, as of now, most likely they will be accepting it, subject to at the time of admission you bring forward the latest certificate as per April 2025। ठीक है, सो हमेशा प्रेफरेंस यही रहती है जो लेटेस्ट रहे, क्योंकि एडमिशन का आपका थोड़ा सा ऑफ कोर्स अप्रैल क्रॉस हो ही जाएगा, तो उस टाइम पे शायद वो आपसे अप्रैल का मांगेंगे, बट अभी के लिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी 31 मार्च, इट्स 24-25, तो कंसिडरिंग वो फाइनेंशियल ईयर वाला सीन या कोई भी जो भी नाम देना चाहो आप ईयर को, उस बेसिस पे 1 अप्रैल 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, देन इट सूट्स, दे शुड एक्सेप्ट इट। For Gokhale, there's one year program for financial economics. Yeah, okay. So first of all, Gokhale के case में, of course, we'll have a separate session for all the subjects or for all the domains. But always choose the course first, your area of interest. Second, at least it should have 2 year validity. Yeah, 2 year duration, so that it kinds of give you a proper
मास्टर्स का डिग्री. आई डाउट व्हेन इट कम्स टू अ 1 year थिंग, देन इट माइट नॉट बी अ डिग्री, इट वुड बी अ डिप्लोमा काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. सो उस केस के उस चीज को आपको एक बार देखना पड़ेगा, वेदर इट्स अ फुल फ्लेज मास्टर्स का डिग्री दे आर ऑफरिंग यू इन 1 year, which is not possible. So just cross check that, and also is that your area of interest or not. So that is very important. Kalpana, so what is the application fee for IIT Delhi? Yeah, I just saw it. It was 200 rupees. ठीक है. I just saw that application जो additional 15 seats का है, the fee is around 200 bucks. ठीक है. So that's about it. Okay. ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया अपना. Information we have seen. हाँ. Like Akshat was asking about in case of IIT Delhi for EWS certificate, right? So agar even in IIT Kanpur also, so this is something that all of you need to understand. An OBC NCL certificate will be valid if issued on or after 1st April 2024, because हम अभी भी 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में हैं. So anything which is issued 1st April से लेके बाद में 24, that is acceptable. लेकिन like I told you, जैसे मैंने आपको बोला, however the time of admission, if any, will be provisional subject to submission of the certificate issued after 1st of April at the time of registration on 28th of July. तो इससे दो तीन चीजें पता चलती हैं that अभी आप जो आपका ऑनगोइंग है 1st April 24, उसके बाद का सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो. सेकेंड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू नीड टू सबमिट द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, विच इज 1st April 2025, और जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी शायद से वो 28th of July है. ठीक है. That's the point. Okay, will be considered value. How it will be considered valid for applying if issued on a same. दोनों के लिए सेम ही फंडा है, सेम लॉजिक है. सो अभी के लिए all your certificates issued on or after 1st April 2024 are fully valid and accepted. ठीक है. सर्टिफिकेशन हो गया, डेट हो गया, एप्लीकेशन फी भी हो गया ₹500, डेट वी ऑलरेडी नो. ठीक है. अब लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है. अब अपने सामने ही लेट्स I would IIT JAM. What are the chances of getting IIT Delhi? Srishti, I guess fair scope, fair chance, but क्योंकि seats are limited and there are further bifurcation in terms of category, तो शायद एक बार को ये हो सकता है, it might not be the first list, but second, but एक जो फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, उसमें फॉर श्योर, क्योंकि इट्स नॉट कि 25 सीट्स हैं तो सिर्फ शायद वो 25 तक ही रैंक रिलीज करें, बिकॉज दे कीप सम स्टूडेंट्स ऑन वेटिंग एज वेल. ठीक है. तो आई फील अगर 25 सीट्स हैं दिल्ली की, सो दे माइट कॉल यू अराउंड टिल 30-35. सो दैट इज समथिंग रिमेन्स टू बी सीन. सो देयर इज चांस इन द फर्स्ट लिस्ट, बट सेकेंड लिस्ट इज फॉर श्योर. ठीक है. देयर इज गुड चांस इन फर्स्ट लिस्ट इटसेल्फ. ओके, लेट्स कम टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी इकोनॉमिक्स. ठीक है. जो आपको बताया, फर्स्ट क्लास इन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए ऑफ कोर्स इन योर ग्रेजुएशन. एप्लीकेंट्स हु सेटिस्फाई द क्राइटेरिया विल हैव टू फर्स्ट take, that's why I told you IIT JAM or GATE, either of the examination you have to take to be considered for IIT Kanpur. ठीक है. Fees, form, certificates, eligibility all sorted. ठीक है. Now let's come to हाँ, अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है. तो अप्लाई ऑनलाइन किस लिए? बिकॉज सम ऑफ यू माइट नॉट बी एबल टू नेविगेट थ्रू द पोर्टल कि कहाँ पे जाके अप्लाई करना है. सो इन ऑर्डर टू जस्ट हेल्प यू आउट, so they have a separate links to different category of courses. ठीक है. MTech has a separate one, whereas all the other courses like MSc, PhD, research and all, they have a separate. ठीक है. So anyone eligible? So this, हाँ देखो, that is the point कि when you're clicking the portal at times is not working, right? तो थोड़ा सा वो बियर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे खुला हुआ है, इट्स द सेम लिंक, राइट? बिकॉज ये पहले खोला हुआ था तो स्क्रीन इज स्टिल देयर, बट व्हेन आई एम क्लिकिंग राइट नाउ इट्स शोइंग मी 404 एरर. सो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक है. कि वेन एवर इट्स अप एंड रनिंग तब आप जाके उसे कंप्लीट कर लो, एंड मेक श्योर वेन एवर यू आर पुटिंग इन एनी डिटेल्स,
देन यू सेव इट, ठीक है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स यहाँ से हमें पता चल गया कि अप्लाई करने का लिंक कहाँ पे है, ठीक है। सो दैट्स इट। और कुछ है? ऑफ कोर्स फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो भी अंडरटेकिंग अगर आपको डालनी है। आप अंडरटेकिंग आती क्यों है? अंडरटेकिंग इसलिए आती है बिकॉज एट टाइम वी डोंट हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो वी पुट इट इन टर्म्स ऑफ अंडर राइटिंग कि एक सेकेंड, आई जस्ट ओपन इट अप, ठीक है। सो दिस विल हेल्प मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर प्लीज कोई आपके फ्रेंड है उन्हें डाउट है, जस्ट हेल्प देम आउट। Or should I apply? Yes, Shrishti, of course, you most likely your admission is sorted. ठीक है, most likely your admission is sorted, but I don't see any reason why you should not apply for a separate seat. The registration fee is very minimal at 200, right? And most likely जब तक वो पेपर आएगा उससे पहले आपका लिस्ट भी रिलीज हो चुकी होगी, सो यू विल बी सॉर्टेड कि मेरा एडमिशन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में कि नहीं। सो अगर हो जाता है तो जस्ट डोंट गो एंड गिव द एग्जाम, राइट। बट अगर in some case scenario it goes to the second list and you have that sense of insecurity कि होगा कि नहीं होगा, then just go and give up the paper, right? तो अभी के लिए only based on a safer side, if you wish to just fill up the form, it's around $200, and the syllabus remains the same. You scored a good rank, and also Indian Eco is not part of it, so you might perform very well over there as well, ठीक है। वो भी तब अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता, अगर आ ही जाएगा तो आप पेपर देने ही नहीं जाओगे फॉर एडिशनल सीट्स, ठीक है। सो दिट्स प्योरली बेस्ड ऑन, बट इफ यू फील कॉन्फिडेंट तो देर इज नो नीड टू फिल द फॉर्म एज वेल फॉर एडिशनल सीट्स, ठीक है। इट्स प्योर गट फीलिंग कि फर्स्ट लिस्ट में होगा कि सेकंड में होगा, विच आई फील फर्स्ट लिस्ट में हो जाना चाहिए, ओनली बिकॉज इफ इन केस स्टूडेंट्स लीव द सीट्स वहां पे, because of course first 25 seats will be occupied based on the ranking as well, तो वो देखने वाली बात रहेगी। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट कैटेगरीज, जो एलोकेशन है वो डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे भी होगा, ठीक है। सो बट अगर मन में कहीं भी डाउट आता है तो अभी एक फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता, आप फर्स्ट लिस्ट देखो, उसके बेसिस पे जाना है नहीं जाना वो आप डिसाइड कर सकते हो, सो इट्स फाइन। ओके, हाँ, तो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि कभी कभार कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। बट वी टेल द इंस्टीट्यूशन दैट वी आर टेकिंग दिस अंडरटेकिंग टू मेक श्योर कि एडमिशन के टाइम पे हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है। तो ये रहा अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, एंड आई हैव नॉट अपलोडेड द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग ऑन द पोर्टल। वहां पे आप टिक कर दो, चाहे वो डिग्री सर्टिफिकेट हो सकता है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी इजंट अप टू मार्क, वो जल्दी इशू नहीं करती है डिग्री, ठीक है। अब आई कांट सफर बिकॉज ऑफ देम, राइट। सो जस्ट पुट इन आई डोंट हैव दैट डिग्री, ठीक है। आई कांट अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट या कोई भी प्रोविजनल, because either I'm in my final year, ठीक है, I haven't obtained or anything, it can be any reason, but हाँ, एडमिशन के टाइम पे आप ले आओगे, सो यहाँ पर टिक कर दो। लेटेस्ट मार्क्स, मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट्स, एनीथिंग, जो भी डॉक्यूमेंट इनमें स्पेशली मेंशन्ड है। और देखो ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी दे हैव एडिशनली एडेड वहां पे कॉलम कि इन केस आपके पास 2024 वाला भी नहीं है, उससे पहले का है, तो डोंट वरी, आप नया बनवा लेना 2025 में रजिस्ट्रेशन एडमिशन से पहले। अभी के लिए आप ये अंडरटेकिंग फिल कर दो। सो दिस हेल्प्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो दैट इज सॉर्टेड। I don't see anything apart from that I need to discuss. Of course, process of filling up the form वो अपनी जगह है, but I can't help it अभी के लिए। The website is a bit dizzy, ठीक है, वो चलती है नहीं चलती है, but we need to bear with that, ठीक है। आप सब उसी को fill up कर लेना whenever you feel like. Every year the exam happens at their campus only, ठीक है। आईआईटी कानपुर का तो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या हुआ था कि देयर वाज अ क्लैश बिटवीन आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली का पेपर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स काइंड ऑफ, मतलब क्लैश इन द सेंस एक एक दिन का ही शायद फर्क था, ऐसा कुछ था। सो वी हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल,
सो द इशू इज दैट दोनों ही केस में, चाहे वो दिल्ली हो या कानपुर हो, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है उनके रिस्पेक्टिव कैंपसेस पे। ठीक है। सो दैट टेक्स अ टोल इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। सो या एट आईआईटी कानपुर ओनली। ठीक है। सो या लाइक आई टोल्ड यू, एप्लीकेशन फीस ₹500, डॉक्यूमेंट्स ये रहे। I'll just see if anything important. Certificates we have already discussed in detail. Undertaking we have already discussed in detail. That's it. That's it. Nothing more or beyond this. The only thing remains is the application form. और जब भी वो stable होगा थोड़ा सा, so I'll try to have a session on that, or I'll share a video on that. Meanwhile, अगर अगर आप अभी भर रहे हो किसी भी टाइम पे, अगर कोई डाउट आता है, just feel free to drop a WhatsApp with the snip of the error या issue. ठीक है. So that's it from this session. Again, best of luck for the preparation of the upcoming exams of different entrances, चाहे वो ISI हो, of course you have MSc का भी date आने वाला है, 10th of April the registration begins, so we'll meet up accordingly. So thank you so much, take care.